guys, welcome to Moscow. Hey guys, welcome back to my vlog and today I'm going to take you to this beautiful city called Moscow. So अभी 6 बज गए हैं और मैं अभी एयरपोर्ट पे पहुंची हूँ. हमारा जो फ़्लाइट है वो अभी लैंड करके अब हम बाहर निकल रहे हैं और एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन करा के एंड देन विल. So it took us almost 40 minutes to did our immigration things and everything, and now we are in the crew coach and heading to our hotel. I think we'll be staying in Sheraton Hotel. So we reached our hotel and this is Sheraton Hotel and already हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 7 बज गए हैं और we hardly have any time. We have very short layover. It's already I think 10 hours. So let's see check-in में कितना time लगता है and then I'll take you forward. Hey, so this is how my room looks like. Look at this bed. I'm so tired. अभी बस सोने का मन कर रहा है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा. But let me just give you a room tour. So let's see what's outside. Okay, so this is the view from my room. Not very appealing, but yeah, I like you. At least you can see the city. Chalo, we have very less time to get freshen up and have a little nap, so I'll do that. Morning guys, just woke up and now I'm going to get ready because I'm going to explore the city. So we hired this local taxi from Uber and it's already 10:20. Let's see how much time we'll take to reach our destination. So 1 घंटे की कैब जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे एंड दिस इज़ हाउ द रेड स्क्वायर लुक्स लाइक. लेट मी गिव यू अ लिटिल टूर. ओके, सो दिस इज़ द प्लेस. आई नो अभी okay, so here I'm just juggling to find a good angle so that you can see me and the location both. Guys, say hello. Video. Say hi. Okay, so this spot right here where she's standing is called the 0 kilometer. It's actually the center point of Moscow. And okay, so now let's enter to the place where we want to visit. Do you see that building right there? Yes, that's. Let me just take you a little closer. So just when you enter, you see this green and red building with this golden dome. It is called Kazan Cathedral. And this red building is the historical museum behind me. Hey guys, welcome to Moscow and I'm at St. Basil's Cathedral right now, and right behind me is one of the most famous building of Red Square. It is called St. Basil's Cathedral. Okay, so अभी हम यहाँ पे we are trying to find out a guide जो कि English बोले because everybody is speaking Russian here and हमको कुछ समझ आ नहीं रहा. So we could not find the English speaking guide, but we actually found this person here who's speaking good English and he is offering some discount on this Hop and Hopper bus, but हमारे पास time नहीं है. The Kremlin, it's place for this? No, this is... मेरा क्रू आगे भाग रहा है तो मुझे भी उनके पीछे भागना पड़ेगा. एंड दिस इज द प्लेस व्हाट इट लुक्स लाइक. So somebody just told us that the Kremlin की जो एंट्रेंस है वो पीछे की साइड से है, so we are heading to that.
ही इज़ द कैप्टन ऑफ द फ्लाइट एंड वी आर ऑल ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्जिट है, वेयर एग्जैक्टली वी वांट टू विजिट। हम लोग यहाँ पे खड़े थे ना, वहाँ पे जो बस जाएगा साड़ी लगा के तुम्हारी वेट करना चाहिए। ओके, सो सबको सोच में ला के समझ आया कि बहुत टाइम लगेगा म्यूजियम के अंदर, तो आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है। मॉस्को में गेंदे की भूल। ये हर जगह है, ये मैं सोच रही हूँ उसकी जड़ निकाल के लेके जाऊँ। उगेंगे नहीं मिलेगी, ठंड में नहीं उगेंगे, ठंड में उगते। सो हम कहाँ जा रहे हैं अभी? Kremlin Palace. Okay, so this is the place from where we can buy our ticket to get inside Kremlin and see what all is there inside. Line तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो चलेगा I guess. I think that's the counter. Let's go ahead. वॉशरूम है क्या कहीं देखा? Okay, so the boys are outside buying tickets, and meanwhile we enter this gift shop and we have all these cute little stuff here, all these what do you call that, souvenirs, right? So you must have seen this doll right here. इसको क्या बोलते हैं? babushka. So let's explore little more before we buy anything. क्या क्या है यहाँ पे? ज़्यादातर सब यही है. Let's see. Okay. So I've selected what I need to buy और let me show you मैं क्या ले रही हूँ. So these are the 3 magnets which I selected. Looks nice. तेज चल लो, हमारा टाइम हो जाएगा। Okay, so Kremlin के अंदर तो हम नहीं गए because you know it was a very long tour and we only have 2 hours. So this is outside Kremlin और यहाँ पे I think कि soldiers are changing position, so we're waiting for that. It's like a view to watch, and but they're taking a lot of time. बहुत दूर से आ रहे हैं ये, yes, 3 soldiers and I think they will change their position. Okay, आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ. Okay, तो I think ये every time they change the position they do this little show here. अब मुझे नहीं पता कितनी कितनी देर में पोजीशन चेंज होती है, बट आई थिंक ये, हाँ, see they're swapping position. Now the guy will come there, हाँ. चलो कुछ तो देख लिया हमने, है ना. सो वी आर रनिंग वेरी लेट. अभी हमको फटाफट से वापस निकलना है होटल के लिए बिकॉज हमारा चेकआउट टाइम इज़ गेटिंग वेरी क्लोजर. सो लेट्स जस्ट से बाय बाय टू दीज सोल्जर्स. बाय. So this is another gift shop we found और यहाँ पे भी बहुत वैरायटी है. all these souvenirs और other stuff also. वो क्या पीछे वो, I like that blue and white thing. Yeah, I love this one. How much are these? It looks very expensive though. लिखा है डू नॉट टच. ओके, सो ये 2 घंटे का हमारा ट्रिप ख़त्म हो गया है.
और अब हम जा रहे हैं वापस। ये रात को इतना अच्छा लगता होगा ना, ये गोल्डन गोल्डन जो है। आई थिंक लाइट, हाँ लाइट लगती है इसमें, सो ब्यूटीफुल। So this was it. This was me with my crew members in Moscow city for few hours. Actually, it was like visiting Red Square in 2 hours of time. It's not a very long layover, but I thoroughly enjoyed it because it was a new place to visit. So